हेगड़े और शाहिद कपूर की आने वाली फिल्म देवा का ट्रेलर रिलीज हो गया है। इसी के साथ ट्रेलर लॉन्च पर सभी सितारे मौजूद रहे। This is truly the brainchild of the man on my left. It's his vision completely, and we've all worked in service of his vision from the time that we met. Probably 8 years ago, he just reminded me. It's been quite a journey. On that journey and along the way, there have been so many people who've come on board, from writers to HODs who've helped us to realize this vision. And it was when Shahid loved the story and came on board that the film actually came together. But I think it's been an incredible creative experience for all of us, the whole production team. Roshan has seen Bombay through eyes that none of us who've lived and grown up in the city have seen it from. So that's incredible. He's presented the city as almost another character. Yeah. And, the film, I think, is going to work pretty much everywhere where we can reach out to audiences. So our colleagues at Z who've supported us from the start intend to take it far and wide. And we're looking forward to the 31st of Jan. I have to say that I have really explored this newfound respect for journalists, because what you guys do is really hard, and especially investigative journalism. I think you need a lot of guts, you need a lot of courage to do the job that you guys are doing. So I think Diya is the perfect tucker to Dev's character. You guys have seen alpha male many times, but I think it's time to now see the alpha female. Because she's not afraid to speak her mind. She's not afraid to say what she's feeling. The article that, he's being questioned about, which is, the line which he's saying that Police ya Mafia is written by Diya, because she's the journalist investigating this. So I feel like she's not afraid to say what she wants, which is the girl of today. She's bold, and I think in the trailer you're seeing the softer side of her, which is also part of Diya. So I'm excited for you guys to explore this character. Well, this is 3 years of our work. This is 1 year of shooting, and this is every day of giving everything that we have, from our head and our heart to every little frame in this film, to give you an experience that will stay with you, hopefully. This is a thriller. We can't talk so much about the film because it will reveal the plot of our film. I hope everybody will be respectful of that when you ask your questions and when you see the film. It's out very soon, exactly 2 weeks from now, 31st of Jan. This is the most complex character I've played. Having said that, I've played a few. But if there was any character that challenged me yet again to ask myself if I am capable of doing this, मैं ये कर भी पाऊंगा या नहीं, तो वो देवा है. और वो रोशन एंड्रूज हैं जिन्होंने ये कैरेक्टर क्रिएट किया और मुझे ऑफ़र किया, और 1 साल हमने इस कैरेक्टर को साथ में डेवलप किया और फिर 1 साल उसको शूट किया. आई वांट टू थैंक एवरीबडी who's been a part of this film. Could not have made it without any of you all. और इस फिल्म में मैंने जो भी किया है, that is only because of Roshan. So rest is up to you guys. Actually, as an actor, आप हमेशा वेट करते हो कि आपको कुछ नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कैसे मौका मिलेगा. ऐसा आसान नहीं होता है. मैं तो जाके कुछ भी नहीं कर सकता. जो फिल्म की कहानी है, जो कैरेक्टर है, जो वर्ल्ड है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, मैं वो ही कर सकता हूँ. और उससे ज़्यादा करूँगा तो ख़राब कर दूँगा. होपफुली उससे कम तो नहीं करूँगा, ऐसा नहीं है मेरा नेचर. लेकिन इस फिल्म ने मुझे फिर से बहुत वक्त बाद ऐसा मौका दिया कि एज एन एक्टर मैं अपने आप को पुश कर पाऊँ. लेकिन there is also a lot of presence and aura of this character. So, there is also an overwhelming personality जो देवा की है, which gives him that charisma and that star quality. So it needed to be a combination of both those elements. And आप फिल्म देखो यार, मतलब बोलने का क्या फ़ायदा है. हम लोगों ने अपना काम कर दिया है. आप लोग देखो. Tell us what you feel. We've given it everything we have. But I have to say he's done it outstandingly well. When I watched the trailer, I called him and I spoke to him and I was like, how have you done it? Like, I can literally count the veins on your forehead and your face. Like, how? And even the first half, where he's like giving his lines I thought it was dubbed, and he's like, no, that's on the scene. But it was so eerie and like I think you're definitely going to see a new Shahid, because I feel like you've seen him do the other characters that he's done in his other films, but this is so restrained and intense, and it's just
amazing. It's because Pooja, I am mafia. ये बैठी हैं मेरे साथ पूजा हेगड़े, इनके साथ बिल्कुल डिफिकल्टी नहीं हुई मुझे डांस करके, बहुत मजा आया. Can you हमने share the कट के बाद ये experience? वाला स्टेप भी किया. Which is that one, Pooja? Ta-ta-ta-na, ta-ta-ta-ta. Yeah. So she loves dancing, and so do I. So we had a lot of fun on the sets of Bhasad Macha. Okay, thank you. Attracted to this investigative journalist, that kind of a character. But I think the brief, in films like Spotlight and these kind of films, when I watched them, I just thought I love the intensity and I like the urge to know and find out the truth. And sometimes, with people like that, they tend to be blinded by everything else except for finding this out. But I think the brief that Roshan sir and I, when we first met, we thought we'll meet for 5 minutes and then we went on talking about our love for films and David Fincher and all these kind of films. But I think the one brief Roshan sir gave me was, I want to see Diya and I don't want to see Pooja. And that was something that I strived to achieve. I wanted her to be authentically herself, be strong but not rude. And she's at the same time, she's not afraid of speaking her mind. So when you watch the film, you will understand and you will kind of know what I'm talking about. But she's at the same time got a little softness. I don't know if that answers your question. So I think that's what I strive for, just being authentically herself. And I think she's pretty much the middle class girl of today who's like, this is what we see in women today. And I think that's what I hope, Roshan, so I've done justice to Pooja or Diya, and I have followed your brief. Well, I think the story is what inspired me most. So from the time that I met Roshan, it's a subject that we've been discussing from the very first time that we met. And the story is incredible. And that inspired me. And then secondly, watching his filmography, which is so incredible. He's such an iconic filmmaker from Malayalam cinema, the films that he's made. So the confidence that that one is a story, then two is the ability of a director to deliver on that story. His filmography inspired that confidence completely. And so that's how the process began. And then when we went to Shai, then he felt exactly the same way. That's how the whole project came together. So, but it started with the story. I always believe in myself. I believe the instinct of mine. So action film, whether the other films run or not run, that's not bother me. For me, Deva, the actions, in this film, all the actions I wrote myself. So the actions should be the part of the screenplay. It's not for the sake of the action. We've not added any action sequence. So all the action sequence is the part of the screenplay story structure. So I don't worry about other film run or not. That for me, Deva is important. If you people are enjoying it, I'm quite happy. That's it. बट शायद उसकी वजह से आपको थोड़ी सी याद आई. बट इसमें एक्चुअली 2 लुक्स हैं देवा की, जो एक थोड़ी सी बहुत सटली रोशन सर ने एडिट में डाली है, क्योंकि जब वो यूनिफॉर्म में आता है तो ही हैज़ टू बी क्लीन शेवन. और दूसरी लुक है जो रगेड रफ, किसी की नहीं सुनता टाइप, सनकी टाइप, जो पुलिस वाला गुंडा टाइप, व्हाटएवर यू वांट टू से, उस टाइप का एक लुक है. लेकिन लुक्स जो है वो तो सिर्फ इनिशियली आपको एक फील देने के लिए होता है. उसके आगे तो कैरेक्टर डेवलपमेंट है, कहानी का मूवमेंट है, कैरेक्टर का टॉप लेयर होता है, लेकिन फिर सब टेक्स्ट होता है, थर्ड लेयर होता है. तो इसके अंदर काफ़ी कुछ है. ये फिल्म की कहानी और इस बंदे का हेड स्पेस, ये दोनों कनेक्टेड हैं. ऐसे बहुत कम फिल्में होती हैं, जैसे डेविड फिंचर, शी सेड, आई थिंक रोशन ऑल्सो रियली एंजॉयज डेविड फिंचर्स वर्क. तो एक चीज़ होती है कि जब आप एक फ़िल्म बनाते हैं जो कैरेक्टर ओरिएंटेड होती है, जिसमें परफॉर्मेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और वो आउटसाइड वर्ल्ड ऑफ द कैरेक्टर एंड द इनसाइड वर्ल्ड ऑफ द कैरेक्टर, वो दोनों चीज़ें कनेक्टेड होती हैं. तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि देवा, शायद हैदर में भी कुछ हद तक ये चीज़ थी, उसका जो मूड था, बट उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स थे. इसके अंदर आई थिंक देवा का जो इनर हेड स्पेस है और जो वर्ल्ड बिल्डिंग रोशन ने की है, वो हमेशा कनेक्टेड है. तो हमारी फिल्म में जो मौसम होगा या जिस तरीके की लाइटिंग होगी, जो अमित यहाँ पर हैं, जो हमारे साथ हैं, अमित रॉय, बिग राउंड अप्लॉज फॉर अमित, एंड केन, हु इज ऑल्सो हियर, द एंटायर टीम इज हियर. तो वो चीज़ें बड़ी इंटरकनेक्टेड हैं अगर आप फिल्म को थोड़ा सा गहराई से देखेंगे, क्योंकि इस फिल्म में सेकेंड और थर्ड लेयर है. आजकल कई सारी ऐसी फिल्में आती हैं जो बड़ी नॉइजी होती हैं और प्रोमो में बड़ी आवाज़ हो जाती है, बट आप 2.5 घंटा जब बैठते हो तो ऐसा लगता है कि उतना ही मिला जो प्रोमो में देखा.
कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको फिल्म देखने के बाद ही आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं ये लिबर्टी लूँगा ये कहने की कि मैंने अपने करियर में जितनी भी फिल्में की हैं ये डेफिनेटली उस कैटेगरी में आती है कि इस फिल्म को देखने के बाद, एक तो इस फिल्म का क्लाइमैक्स जो है दैट्स द रीज़न आई डिड दिस फिल्म, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा बट इट्स गोना बी वेरी सरप्राइजिंग, बट ये उस कैटेगरी में आती है फिल्म जिसके बारे में आप देखने के बाद भी बात कर सकते हैं, शायद सेकंड टाइम भी देखने का मन करेगा उसको पूरी तरह समझने के लिए, बट साइमल्टेनियसली बहुत ही एंटरटेनिंग फिल्म है, कहीं पे भी पेस स्लो नहीं होती है और बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है फिल्म की और कैरेक्टर की हेड स्पेस की. तो फॉर मी दैट इज़ व्हाट देवा इज. इट इज़ द हेड स्पेस ऑफ द कैरेक्टर इन द वर्ल्ड दैट हैज़ बीन बिल्ट अराउंड बाय रोशन एंड द थ्रिलर एस्पेक्ट विच कॉन्स्टेंटली कीप्स यू वंडरिंग कि हो क्या रहा है. दैट्स व्हाट इट इज़. आई थिंक माई होल मेरा पूरा जो खाना था सेट का वो स्पॉन्सर्ड बाय शाहिद. शाहिद हैज़ फेड मी अराउंड आई थिंक 10-15 दिन. ही हैज़ गॉट फूड फॉर मी. या सबको नहीं मिला. So Shahid used to get me a whole dabba, like a whole buffet for me. हाँ मेरे घर पे cook नहीं था उस दिन 10 दिन के लिए. So Shahid was kind enough to get food for me, which was lovely. And मुझे नहीं पता था मेरे contract में वो भी add हो गया. So nicely done. But I think our bromance on screen was fantastic because we got along very very well off screen. I met Shahid I think before we shot. 10 days before I think Diwali पे कहीं पर and I told Shahid कि did you know that time I was doing the film? Shahid knew. But that's the time I told him that I've grown up, you know, copying his dance steps, and I joined Shamak because Shahid was in Shamak. So I've always been a big fan of his. Always been a big fan of Roshan sir. And Siddharth sir, I just want to say, you were the first person who called me after Thappad release. So that was the biggest thing that I could get a call from you. So I've worked with this wonderful crew, and Shahid was literally the backbone of this. So thank you. Well, I think, you know, it was about the story really. There was no brief other than him sort of, you know, like narrating the story of the film. And it blew us all away. It blew me away, it blew our team away, Malvika, Insea, you know, all our whole team from Roy Kapoor Films. Loved it and decided that we had to make it. And that's really where the journey began. So he didn't really have to give me much more of a brief than just saying what the story was. I just felt like I was at that point in my career where the roles I do now will define me who I am as an actor. And I just wanted to like take versatile roles like the other film of mine where I'm playing of very different characters compared to this. I think by that he means like that I'm working in many languages about the crossover. I think it's a reflection of the films that I've done, and I've just always believed that to go wherever the content is good, and I've gone by my gut feeling. But my journey has always been like, you know, like it's not just been that one pan-India film. I think it's because I've worked in Telugu, I've worked in Tamil, I've worked in Hindi, and I've been loved and appreciated and accepted, which is a privilege, I feel. It's an honor, and it's truly humbling and makes me work harder. So thank you so much. And I don't know, maybe I'm a Mumbai girl who started my career in Tamil Nadu and got love and appreciation in Telugu, but I am from Karnataka originally, so maybe that helps too. I saw something beautiful the other day. It says that as actors, we should be allowed to fail. Okay, because only when we fail, we will be able to give you something new. Otherwise, we get into the pattern of following the trend and following what kya chal raha hai, kya nahi chal raha hai. So I concentrate on what can I bring new, and that's where I am at in my life, and I can only answer for myself. I think agar hum dekhe ki kya chal raha hai, kya nahi chal raha hai, like, you know, I don't know, like box office is very important for sure as a producer, and I hope that Sid Roy Kapoor is raking in all the money for this film. But at the same time, I feel like it's not a pressure that I should take, because as long as I do the job that has been commissioned to me right and fair enough, that pushes me more than box office numbers. और बहुत बार हम देखते हैं कि फिल्म बहुत अच्छी है पर बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली, पर 10 साल के बाद it's like a super hit film.
and we are like, "Arey, why didn't this film really work at the box office?" So as long as you make something that lasts for generations and people come back to you and say, "That was a really good film," that is what I strive for. शायद का पैसा होता है लेकिन प्रेशर सब पे होता है, यू नो, बिकॉज नोबडी वांट्स टू बी अ पार्ट ऑफ अनसक्सेसफुल फिल्म. ये तो कोई भी नहीं चाहेगा. और आप फिल्में ऑडियंस के लिए बनाते हो, ऑडियंस आएगी नहीं तो दिल तो टूटता है, यू नो, और बहुत बार टूटता है. और वही हमारा, लाइक शी इज सेइंग, यू नो, वी फेल एंड वी विल फेल. और कोशिश हमेशा ये होती है कि जितने लोगों को आप फिल्म दिखा सको आप दिखाओ, लेकिन हर फिल्म की कहानी अलग होती है, उसकी रेंज अलग होती है. अगर आप सिर्फ इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्में बनाओगे कि ये कितने लोग देख सकते हैं, तो आप एज अ क्रिएटिव पर्सन कभी कभी लिमिटेड हो जाओगे. मुझे ऐसा लगता है कि आप या तो 100 मीटर की रेस भाग सकते हो, उसमें सिर्फ वही बनाओ भी जो चल रहा है, बनाओ बनाओ बनाओ. अगर आपको लंबी रेस भागनी है तो आपको अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा. आपको अलग अलग चीज़ें करने की आदत डालनी पड़ेगी. जैसे आप देखते हो ना, क्रिकेट में बड़े सारे नए प्लेयर्स आते हैं, IPL में बहुत सारा अच्छा खेलते हैं, फिर इंटरनेशनल टूर पे जाते हैं तो नहीं चलते, क्योंकि उन्होंने एक ही चीज़ के लिए प्रैक्टिस की है. फिर वो 2 साल स्ट्रगल करते हैं, फिर वो टेस्ट मैच खेलना सीखते हैं, फिर वो 50 ओवर्स खेलना सीखते हैं, फिर वो ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में खेलना सीखते हैं. तो वो लॉन्ग जर्नी होती है फिल्म की, है ना. तो अगर आपको एज एन आर्टिस्ट ग्रो करना है कि आप 30, 35, 40 साल काम कर सकें, तो आपको अलग अलग तरह की चीज़ें करनी पड़ेंगी. उसमें हिट्स भी होंगी, फ्लॉप्स भी होंगी, लेकिन आपकी जर्नी ग्रो करेगी. You know, but of course, every film we do, we wanted to do extremely well, and we do our best to do that. And Devatu, from the beginning, we are saying is a film for the audience, for the masses. We've made it to entertain you, but it's an intelligent film. हमारे डायरेक्टर मलयालम हैं. नहीं, जो आप कह रहे हैं वो बहुत ही सैड इंसिडेंट है, एंड हम सब कंसर्न्ड हैं, हम सब फ्रेटर्निटी से बहुत बहुत कंसर्न्ड हैं. आपने इनडायरेक्टली पूछा, आप डायरेक्टली पूछते ज़्यादा रिस्पेक्टेबल लगता. You know, because we hope that Saif's health is better, and we hope that he's feeling better. और आई थिंक हम सब बहुत ही शॉक थे जो हुआ उसके साथ. इतनी पर्सनल स्पेस में बहुत ही मुश्किल चीज़ है अब्जॉर्ब करना मुंबई जैसे शहर में. यहाँ पे आई एम श्योर पुलिस पूरी कोशिश कर रही है. ऐसा होता नहीं है बॉम्बे, बहुत ही मुंबई सेफ शहर है. यहाँ पे आप प्राउडली कहते हैं कि 2 बजे 3 बजे भी अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर, कोई लेडीज़ हो, वो अगर रोड पर जाएँ तो बहुत सेफ रहता है. तो बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट है, एंड वी आर होपिंग दैट, you know, उनकी हेल्थ जल्दी रिकवर करे. वी आर होपिंग एंड प्रेइंग फॉर हिम ऑल द टाइम.